Hello there, I'm Super and you're watching SUPAbility by Supreet Bedi. Yes, that's me too. Super is just my nickname and super ability in communication and personal presentation for you is what I'm aiming at through this channel. Now, using correct English makes a huge difference when making an impression. So today I'm going to cover a few prepositions that my students tend to make a mistake on. These are common mistakes indeed, so please pay attention and fix them right away. I'm sure आपने ये words सुने होंगे, in spite of and despite. Now these are used when we are presenting contrasting ideas, just like although or even though. Purpose सबका same है, लेकिन structure में थोड़ा फर्क है. Let's see what is the difference between the two, in spite of, despite. The answer is none. There is absolutely no difference. They are in fact interchangeable. आप एक की जगह दूसरा भी यूज कर सकते हैं. So बिल्कुल यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. They both are exactly the same in usage. फर्क सिर्फ इतना है कि एक के साथ off लगता है और एक के साथ नहीं. In spite of, despite on its own. Despite के साथ आप off नहीं लगाएंगे. In spite के साथ ऑफ लगेगा. तो अगर आप इंस्पाइट को अपने आप में यूज कर रहे हैं तो गलत है. अगर आप डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा रहे हैं तो भी गलत है. लेट्स यूज इट इन अ सेंटेंस एंड सी द कंट्रास्ट दे ब्रिंग. Rihanna went to her friend's wedding in spite of her parents' refusal. So parents ने मना किया, रेहाना फिर भी गई. She did the contrast of what she was supposed to do. See, contrasting ideas. Let's try the same with despite now. Rihanna went to her friend's wedding despite her parents' refusal. इसको घुमा भी सकते हैं by starting the sentence with despite or in spite of. Let's see. Despite her parents' refusal, Rihanna went to her friend's wedding. In spite of her parents' refusal, Rihanna went to her friend's wedding. याद रखिए, despite of is incorrect. यहाँ off लगाना बिल्कुल गलत होगा. ये छोटी छोटी चीजें make a big difference. You can be all suited and booted, ready for an interview, looking the part with crisp body language. But if at an interview you say, "Thankfully, I reached on time despite of the heavy rain," impression पे बहुत ही बड़ा question mark लग गया, because आपने एक गलत off लगा दिया. तो अगर मैं आपका इंटरव्यू ले रही होती तो मुझे लगता, वाह क्या फर्स्ट इंप्रेशन है, I like the way you dress. तो मैं खुश हो रही हूँ अंदर ही अंदर देखकर कि हाँ यहाँ पे पोटेंशियल लगता है. क्रिस्प बॉडी लैंग्वेज, यहाँ पे बिल्कुल पोटेंशियल लगता है. आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी अबाउट दिस कैंडिडेट. एकदम से इस कैंडिडेट ने कहा डिस्पाइट ऑफ, और मेरी शक्ल ऐसे हो गई जैसे डिडंट एक्सपेक्ट दैट. तो एक क्वेश्चन मार्क लग ही जाता है. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी कम्युनिकेशन को साफ रखें, करेक्ट रखें, एंड जस्ट मेक श्योर दे नॉट silly mistakes that English language does not allow. So the correct sentence here would be, "Thankfully, I reached on time despite the heavy rain." Now, what's the contrast we're presenting here? Heavy rain है तो कहीं पर भी time पर पहुंचना impossible है. That's the assumption, but you did it. It's a contrasting result that you achieved. You can also add the fact that after despite or in spite of, the structure will change a bit. So listen carefully. Thankfully, I reached on time despite the fact that there was heavy rain. Or, in spite of the fact that there was heavy rain. In spite of the fact that Shreya didn't get much study time, she passed her exam. अब यही sentence the fact that के बिना कैसे बोलेंगे? In spite of not getting much study time, Shreya passed her exam. कुछ notice किया आपने? गेट का गेटिंग हो गया, मतलब ing ऐड हो गया, बिकॉज इन स्पाइट ऑफ नॉट गेट मच स्टडी टाइम इस केस में गलत है, सुनने में ही गलत लगता है. आई एम श्योर यू कैन टेल. सो गेट चेंजेस टू गेटिंग ing, and then you can restructure the sentence and it's the same thing. एक contrasting thought, दूसरी contrasting thought, दोनों का मेल. So आप दोनों तरीकों से यूज कर सकते हैं इसे. Please now try making your own sentences up and I'll give you some contrasting thoughts. You can put the answers in the comments and I will check them as always. Now let's take 3 practice sentences here. You have to use in spite of or despite and connect these sentences. You can even add the fact that to make it a bit easier if you wish. Here we go. First sentence. The bus didn't come. Parul reached school on time. 2 contrasting sentences in one. Obviously, bus यहाँ पे time पर नहीं आई, पर पारुल टाइम पर स्कूल पहुंच गई.
तो यहाँ पे डिस्पाइट इंस्पाइट लगा के एक सेंटेंस बनाकर जल्दी से कमेंट में डाल दीजिए। सेंटेंस नंबर 2, वी आर इन लॉकडाउन, रेनन्स बर्थडे पार्टी वाज अ सक्सेस। अगेन अ कॉन्ट्रास्ट, लॉकडाउन है तो उम्मीद होगी कि बर्थडे पार्टी शायद नहीं मना सकते, लेकिन मैं यहां कह रही हूं कि लॉकडाउन के बावजूद पार्टी अच्छी तरह से सक्सेसफुली हो गई। तो फिर 2 कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंसेस फिर से आ गए। लगाइए डिस्पाइट इंस्पाइट, कमेंट में डालिए। सुप्रीत इज बिजी विद हर ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, शी मेक्स सुपेबिलिटी वीडियोज। 2 सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं जो अलग अलग है। अगर मैं इतनी बिजी हूं तो फिर मैं वीडियोस कैसे बना रही हूं? तो कंट्रास्टिंग सेंटेंसेस अगेन इन वन, तो जल्दी से लगाओ डिस्पाइट या फिर इन स्पाइट ऑफ एंड द फैक्ट दैट। अगर लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना तो उसके बिना भी आप सेंटेंस बना सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। सो हैव अ गो एट इट, put that in the comments. Hint, hint. Sentence structure is in your hands. The second part of the sentence can also come first. Basically, that contrast just has to make sense. क्या ये नहीं हुआ फिर भी वो हुआ? The surprise element. Time for me to go, despite the fact that I'd like to bring you more material right away. I'm sure you get the idea now. I'm awaiting your sentences in the comment section, so make sure you give them a try. And please do like this video if it made sense to you. Thanks much.